all file represent a sequence of bytes regardless of its being text file or binary file. Okay, all file represent a sequence of byte. आमे जो फाइल गुडा को स्टोर करूचे एटा गोटे बाइट रे स्टोर हबो. सो जेंते हमें बाइट बीट रो बाइट रो मेगाबाइट मेगाबाइट रो गीगाबाइट तो आमे तार कोन से फाइल टा को स्टोर करबा एटा बाइट फॉर्मेट रे स्टोर हबो. दिस बीइंग a text file or you can tell us it is a binary file. C programming language provide a access on high level functions as well as OS level call to handle the file on your storage device. So why these files are needed? When you store the data in a variable, आमे जो data गुड़ा का variable ले store करूचे तो सेटा केवल सेही प्रोग्राम पे एग्जिस्ट करूचे. बस ये प्रोग्राम रे हमर वैल्यू रहला वैल्यूटा इनिशियलाइजेशन है रिजल्ट आम पाइले आम डाटा से पड़ेगा. बट किसी एमती इनफॉरमेशन अच्छी जो इनफॉरमेशन को आम परमानेंटली स्टोर करने को चाहूचे तो से समय आम यूज करवा कौन ना फाइल. फाइल आम जहाँ भी इनफॉरमेशन स्टोर करवा सो इट इज स्टोर इन ए excuse me permanent basis. So when a program is terminated, the entire data is lost. Storing in a file will preserve your data even if the program terminates. आमर प्रोग्राम टा टर्मिनेट हेले भी आमर फाइल टा सेठी परमानेंटली स्टोर होबो. If you have to enter large number of data, it will take lot of time to enter them all. However, if you have file containing all the data, you can easily access the content of the file using few commands in C. You can easily move your file from one computer to the another computer without any kind of changes. By using a program, आमे फाइल और लोकेशन टा को भी चेंज कर परिबा. गोटे जगह रो आ गोटे जगह को आमे फाइल लोकेशन टा भी चेंज कर परिबा. तो दैट इज द वर्क ऑफ योर फाइल. So type of file, what are the types are available? When dealing with a file, there are two type of file that we are using, that you know it is a text file, another is your binary file. So two file we are using, one is text file, another you can say as a binary file. Text file are the normal .txt file. You can easily create the text file using any sample text editor such as Notepad, Word, okay, WordPad. तो यही सब जगह जितना हमें फाइल टा स्टोर करूचे एटा .txt फॉर्मेट रे स्टोर होबो. When you open those file, you can see the contents within the file as plain text. You can easily edit or delete the content. They take minimum effort to maintain and easily readable and provide the least security and take bigger storage space. Not a better storage space हमारा file टा. The binary file are mostly stored in .bin file in your computer. Binary file टा हमें कही परिबा जोटा हमें 0 1 फॉर्मेट रे स्टोर करूचे, तो you can say it is called as a binary file.
So as you know that when you passing the instruction to the computer, it is doesn't understand the data that were provided. तो आमे जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करिवा कंप्यूटर ओनली नो द 0 and 1 फॉर्मेट आमे कीबोर्ड रे ए बी सी डी ई एफ ए सब लिखा अछि किंतु कंप्यूटर से सब बुझी पारेनी कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड द 0 and 1 फॉर्मेट so they can hold the higher amount of data are not readable easily and provide a better security than the text file. Then for opening a file, you can use the fopen function to create a new file to open the existing file. This call will initialize an object of file which contains all the information necessary to control the stream. फाइल टाको ओपन करबा को हेले हमें यूज करिवा fopen file open then mode. fopen is used to opening a file. जदि हमर किछि existing file अछि ताको जदि हमें ओपन करबा को चाहू छे हमें fopen लिखिबा then mode हमें फाइल टाको ओपन करबा को पर्पस रे हमें फाइल रे जनरली तीनटा वर्क करि परिबा जदि खाली नॉर्मली हमें परमिशन दे परिबा ओनली यू हैव टू रीड द फाइल आउ जने कोन करि पाबो खाली खाली राइट करि परिबो आउ जने कोन करि परिबो ना रीड एंड राइट बोथ ऑपरेशन करि परिबो so you can use open function to create a new file or open the existing file. Now what are the mode and description we're using? R is used for open the existing text file for reading purpose. W is used for open a text file for writing. If it is doesn't exist, then it is create a new file. A for open the a text file for writing in appending mode. Appending रे अर्थ होची कोन ना मो तले फाइल टा किछि लिखुची से एक्जिस्टिंग फाइल रे आउ किछि डाटा मु जदी ऐड करबा को चाहूची सेठी मु अपेंड यूज करिवि r plus is used to open a text file for both reading and writing ପାଇଁ मु r plus यूज करिवि w plus is used open a text file both reading and writing. It is a fast truncate the file to 0 length if it is exist, otherwise it create a file it doesn't exist. W plus हेले हमारा फाइल टाको से ओपन करियो बोथ रीडिंग एंड राइटिंग पर्पस पे and it is the first truncate the file to 0 length if it is exist, otherwise it create a file if doesn't exist. यदि फाइल टा नाही ताले ऑटोमेटिक आ गोटे फाइल क्रिएट करियो आ यदि फाइल टा अछि ताले से ओपन करियो बोथ रीडिंग एंड राइटिंग पे. The next part we are using, it is use open a text file for both reading and writing approach. मुझे यूज करी both reading and writing पे. It create the file if it is doesn't exist. The reading will start from the beginning but writing only be appended. तो फाइल टाको से रीड करिवो फ्रॉम द बिगिनिंग रू रीड करिवो किंतु जते बेले फाइल रे हमें किछि लिखिबा
ସେଟା ସେ ଲାଷ୍ଟ ପୋଜିସନରେ ଲେଖିବ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଥିବ ତାର ଲାଷ୍ଟ ପୋଜିସନ ହିଁ ସେ ଡିଫାଇନ୍ କରିବ ଏଇଟାକୁ କହିବା ଆମେ A ପ୍ଲସ୍ is open a text file for both reading and writing. It create a file if doesn't exist. The reading and writing will start from the beginning, but writing can be only appended. Okay, so now it is a program which is used for creating a directory. Directory means for creating a folder. ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡର ବନେଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ এই প্রোগ্রামটা ইউজ করিবা সো ফার্স্ট I run the program then I will tell you what is written over there. ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖଉଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍
ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କରେକ୍ଟ ଅଛି, ଏଠି ରନ୍ ହବନି। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଏଇଟାକୁ ଲୋଡ୍ କରିପାରୁନି। ସେଇଟା କଣ କମ୍ପାଇଲରରେ ରନ୍ ହଉନି ନା କଣ? ହଁ, ଏଇଟା କାହିଁ ଲୋଡ୍ କରୁନି କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି? ଲୋଡ୍ ହଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିବା। ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଯାହା ଅଛି କରେକ୍ଟ ଅଛି, ରନ୍ ହଉନି।
will succeed ଦେଖଉଛି। ଏଇଟା ନବା କଥା ନଉନି କାହିଁକି ନା task include ଟିକେ ଏଠି ଲୋଡ ହଉନି। ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଡଟ୍ ଏଚ୍ ନଉଛି। Okay, so D drive my December folder. So I run the file. File new project okay. And so your directory created. Now we check that my December folder in the D drive it is created or not. See there 28/20/27 ଏବେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ଫାଇଲଟା ଫୋଲ୍ଡରଟା ବୁଝିଲା ତ ଏଇ ଫୋଲ୍ଡରଟା ଆଜ୍ଞା କେମିତି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ଦେଖ ଆ ପାଇଁ ଆମକୁ ଏତିକି ହେଡର ଫାଇଲ ସବୁ ଡିଫାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ
जदि विजुअल स्टूडियो रे करूछ डायरेक्ट डॉट एच लिखिबो आ नले जदि अलगा टर्बो सी गुरा सब जदि करिवो ताले dir डॉट एच लिखिबो आगे तेरे ठेला int आगे से कंपाइल करता है जितना कोन कहला से माने अलग अलग कंपाइलर पे अलग चेंज करिया पड़ो ठीक हाँ सी रा एटा टिके प्रॉब्लम अछि हमें जदि आईडी टा चेंज करिवा तो मे बी हमको एक्स्ट्रा पीस ऑफ कोड आगे लिखा को पड़े बुझिला आगे तो एठी हमें यूज करले कोन stdio.h direct.h okay then we're using character char star dir name तो d drive d colon डबल स्लैश यूज कराबो फाइल रा पाथ टा बने पे हमें को फोल्डर टा बनाउ चाहू छे तापर एठी हमें जो वेरिएबल टा यूज करले चेक चेक टा जदी गोटे पॉजिटिव नंबर शो करिवो दैट मींस my folder is created check mkdir dir name if checking if the directory is created okay if not check then it is showing you the directory is created and not check हेले माने एटा यूज करा हबो चेक टा हेले से मते 1 यूज करा हबो जदी 0 हैला ताले मते देखिबो डायरेक्टरी क्रिएटेड or else it is showing you unable to create a directory तो मते जदी तुम देखियो चाहिबो जे चेक रा वैल्यू टा एक्चुअली कोन प्रिंट एक्चुअली चेक रा वैल्यू टा कोन देखियो है ना -1 आम आउ गोटे बनै दउछे सपोज माय फोल्डर 3 ओके एटा होची 0 नॉट 0 जदी नॉट 0 माने 1 देन सो करिवो डायरेक्टरी क्रिएटेड ओके नॉट चेक मींस नॉट 0 है ना ओके नॉट 0 ही गला माने 0 रो नेगेटिव आसी गला कोन डायरेक्टरी क्रिएटेड आ जदी खाली 0 रिटर्न कले माने अनेबल टू क्रिएट a डायरेक्टरी बुझेला Yes, sir. ऐसे